So That's of course, why all these F1 cars are so. they're so low. They're so low. I mean, to give you a brief idea about what an F1 car is capable of, those wings you see in the front and rear of the car, they're capable of creating downforces in north of 100 kilos at very low speeds. You know what I mean? So Not really. Could you explain? so yeah, I mean, it's a pretty cool looking thing, like. और आगे एक राइट टर्न था, उसके आगे के राइट टर्न में मैंने बिकॉज स्लो चलाना था थोड़ा जल्दी ब्रेक मार दिया, ब्रेक्स लॉक हो गए और मैं 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सीधा टायर वॉल में घुस गया. One of my mentors is 8-time national champion Mr. Raymond Banaji. He's always mentioned this, and I've learned this lesson since the first time I heard him say these words in 2015. He's like, fast drivers do not necessarily win championships, but fittest drivers do. And रेसिंग का सोचना छोड़ के हमने गाड़ी वाड़ी खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, चिल कर रहे, लोग दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे, काफ़ी अटेंशन मिल रहा है, ड्रीम कंप्लीट हो गया. बर्थडे के दिन मर्सिडीज खरीदनी थी, चलो 2-3 महीने लेट आई, पर फिर भी क्या हुआ, मर्सिडीज तो आ गई, खुश है हम. कौन सी मॉडल थी? मैंने C300D ली, वो AMG लाइन जो आती है, काफ़ी पावरफुल गाड़ी है, बट इट्स अ ग्रेट कार फॉर डेली यूज. 30th बर्थडे पे 300. और फिर आखिरी के जो 40 मिनट थे ना रेस शुरू होने के पहले, वहाँ पे मैजिक शुरू हो गया. अच्छा. और ये जो मैजिक हुआ है ना, ये शायद ये मैजिक ही कहा जाए. ओके. जो टीम डायरेक्टर थे लीग के, उन्होंने मुझे कहा तू रेडी हो जा, मैं देखता हूँ रेस 30 मिनट डिले कर सकते हैं कि नहीं. अच्छा. तो वो कहावत है ना कि डोंट क्लाइंब द माउंटेन फॉर द वर्ल्ड टू सी यू, क्लाइंब द टॉप ऑफ द माउंटेन सो दैट यू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली. Hello friends and welcome back to a brand new exciting episode of Sports Backstage. Today the guest that we have with us is Mr. Pratik Sonawane, the national car racing champion of India. And today I am going to try and dive deep and learn about his journey and how he became this champion in this sport that we know as motorsports. And if you are a fan of motorsports or want to know more about it, this is the place to be. And I hope you will enjoy it as much as I'm going to enjoy shooting it. So stay tuned and subscribe to the channel for more such sports related content. Presenting to you Mr. Pratik Sonawane. Pratik, it's an absolute honor to have you with us here on Sports Backstage. Would you like to tell us how you're feeling today? First of all, I'm super happy, and thanks to you, I'm feeling really grateful to be here. I mean, always happy to share my experiences, share a few of my learnings through this journey. So I'm feeling great, really excited to see how this conversation goes. So before we start, I would just like to tell the people watching us that we had a few minutes before this video, before we started shooting this, and got to know him a little bit. And since I've not done a lot of podcasts, but I've done around 5-6 till now, and slowly I feel that I have started to read vibes of the different guests that have been here. And today what I've read is that you give a very, what do you say, the energy that comes out, the energy that you exude is very like someone who's very focused, someone who's very determined, like you say, like eyes on the prize kind of guy. So I would love to get to know more about that. And first of all, I'd like to congratulate you. So today with us we have a national champion winner. And so how did it all start? Well, first of all, thank you. The story starts pretty much back in, I think, 1996. I used to be a very naughty little boy in the family, 3 elder sisters coming from a middle class background. We grew up in a taluka level place. I think my earliest memory of cars or driving dates back, I think, when I was 4 years old. So a typical setup in the Indian household. Mom's stitching some clothes because she loves sewing. My grandmom's doing her own stuff. Dad's in the office, sisters are in colleges and schools, and there's this little boy hopping around the house playing with his toys. And the TV is on, some Bollywood flick is going on. And I see the hero and the villain actually chasing each other in cars. And you remember those old Bollywood scenes where the hero is always moving the steering like this even though the car is going straight. And मुझे बहुत पसंद आया वो. I was just like, this is cool, and I want That's such an interesting observation. I've never noticed that till now. They're always like this when the car's going straight. Yeah, I mean, when I started driving, I was like, okay, this is how the heroes used to do it. But if I do it in real life, the car is not going straight. And, but yeah, like I saw that in the TV. And the next thing that I see on the left is my mom stitching clothes on a sewing machine, which is like a big table with a machine on top, a big pedal on the floor,
and it has this small steering wheel looking thing on the sides, and I'm like, you know what, that's my car. Yeah. So I pull up a stool with all the energy I have, all the strength I have, because I was a little scrawny kid. और उस पे खड़ा होके मैं steering को पकड़ के हीरो जैसी कार चलाने लगा. That is my earliest memory of falling in love with driving cars. Okay, so like I think everyone who has been in sports or has been a sportsman in his life, they've had such instances, about when they've been introduced and the first time they've actually done it professionally or done it at, what do you say, like in the on the field, as we would say, or on the track in your case. Yeah. So when was that? When did you when was the first time you sat in the race driver's seat and you felt, this is what I want to do? I think the first time I sat in a kart was, I think, somewhere around 2013, where I went to karting recreationally with a few of my friends. That was a decade ago. It's been a long while. Yeah. But my first memory of motorsport actually dates back to 2008 or 9, when there was a street race happening in the city of Pune. And turns out it was a Volkswagen Motorsport Polo Cup race. And how the fortunes have been, that was the first time I actually went to a race to attend, because my friend Anup in my building, he was like, you know what, Pratik, let's go, there's a race happening, it's about 15 minutes from our place, so we should go. And we were young. I loved cars, of course. Fast and Furious was a thing when I was a kid. I used to watch all of those movies, and I always wanted to have a car like that. So we went for that race, and I didn't even have a ticket. I was in the general stands, like a little, stout fellow looking through all the crowds to see, at least get one glimpse of the race car and the race drivers in those racing overalls. I was fascinated by it. I did not have even 1% of an idea that I would end up racing. Then I just saw it from a distance. I was dreaming. I was like, you know what? I'm a small town kid. Ye bahut bada hai. This is a different world, and I don't think I'm ever going to become a part of it. So that's my earliest memory of motorsport. But in 2013, I went karting recreationally at a local karting track next to my house in Pune with a few of my friends. I loved it, enjoyed it, but never thought anything beyond it. In fact, whenever I had a chance to figure out, what am I doing? Do I like cars because I like cars, or do I actually like to drive? Yeah. So it was a beautiful transition to come to realization that I like cars, but I love to drive. To drive, that's a very valid question. So I knew I liked cars. I was under the impression that I loved cars as well, but the reality was that I like cars. I love few aspects of cars, but I love driving the car fast. So as I came to that realization is when I found a way that, racing is what I want to do. So I think when we say that you found your love for driving, I think there are many people in India who love to drive, right? But who enjoy driving the car fast as well. Yeah. But I think very few, if not hundreds, I think maybe even less than hundreds, who actually go into this professionally and want to be an athlete in this particular sport. Yeah. So what about it attracted you? I think the battle with time, number one. Right. See, as a rookie, I always knew I loved driving. As a person who loves car, I knew I could drive fast. But the reality is, every skill has its own mojo. And you need to find your way to gain that mojo via experience, by putting in efforts, doing some trainings, fundamentally understanding the sport, gaining fundamental knowledge about the sport, put in a lot of hours, put in a lot of rigorous hours to actually get there. When you go competing, everyone wants to be the best, everyone wants to come first. The idea is to always figure out a way how you can improve, how you can grow. So the thing that attracted me about motorsport was the sheer speed, the sheer thrill of speed, the sense of becoming one with the kart or one with the race car that I'm driving, the feeling of weightlessness, the feeling of going as fast as you can and trying to push your limits every single time you're going around a corner. I think those are the things that really, really got me hooked onto racing. So I think what you're saying is that when we play a sport, or even when we do something that we love, we often end up in the zone. We end up in flow state. So do you often go there while you're racing? Where you feel that, the car is one with your body is one with the car. It feels like an extension of your existence. I think it's, if I could compare it to, so first of all, it's not very frequent to reach that zenith of experience.
to feel the level of connection that is like really at the top. That usually comes as a pleasant surprise when Yeah. you're really putting in grueling And hours. you know about it once it's over. Oh man, You don't even yeah, realize when it's you going gotta, on. yeah, you gotta believe me when I say this. July 2019, I believe it was the second free practice session. Right. A few hours before qualifying in the Volkswagen Amio Cup, I was driving the Amios back then, and there was this one corner, we call it the small D. That's at the exit of C4. We enter into a nice sweeping right-hander. It's call it the small D, and then we target into the bigger D at Chennai. The sun was setting. I could see the sunset in the horizon, and I was in a different zone. I was not feeling like I'm putting conscious effort into turning the car, conscious effort into pushing the car to its limit. I had no sense of aggression. I was focused and relaxed at the same time. And that one moment, I think I will never forget in my racing career, or in my any time that I've been on the track in a race car. I would never forget that one moment in time where I think I hit a 153.6, which still stands as the fastest lap time around Chennai racetrack in a Volkswagen Amio. When you say 153.6, like, okay, so like for those of us who do not know what yeah. exactly it means, so we will think it's 153 kilometers per hour. I'm not sure exactly what it means. So could you explain? So what I'm going to do is I'm going to actually give you a benchmark to figure out what it exactly means, right? Yeah. So 153.6 is 1 minute 53.6 seconds. Okay. And how would you gauge if it's fast or not is around the Chennai racetrack, a Ferrari 488 Pista Okay. or a Ferrari 458 needs 1 minute 52 seconds to cover a lap time. Oh, wow. I was 1.6 seconds slower in a Volkswagen Amio, which cost perhaps 1/50th the cost of a Ferrari. So that's what's beautiful about race cars. Like a sports car is like this really glamorous looking, beautiful design, massive engine, lots of power. But a race car is built for business. You get into a race car, you're talking shop. Like that car is not going to give you mercy. You make a mistake, the car is going to give it back to you. So the race cars are built, purpose built, running on slick tires to have maximum amount of grip. They have specific tuned suspension to give you the maximum amount of balance while entering a corner, exiting a corner, braking, accelerating. The engines are tuned to give you maximum performance. And then it's a beautiful contemporary dance of the right gear shifts, the right brake balance, the right entering a corner, the right exiting a corner, maintaining mid-corner speed, the pitch and angle and tip of the car, and so many beautiful other things. Like you almost feel like a mathematical genius when you're behind the wheel of a race car. So that sort of experience, I really felt, so it was actually a race weekend around my birthday. So it seems that every time there's a race weekend around my birthday, I really get into the zone. So Yeah. it seems Birthdays like are lucky somehow. yeah, I mean that's one beautiful experience that I've had. But yeah, it comes after a lot of grueling sessions. You have to have immense amount of self-belief. It gives me like a lot of happiness, and gives me a lot of I feel really good when I hear about different versions of when people or athletes have been in the zone, especially athletes, to be honest, because it's just such a beautiful place to be in. Yeah. Especially if it takes one to know one. So, but since motorsports is still such a developing, and we can still say it's in a nascent stage in our country. So we would like to know what is the lifestyle of a motorsports athlete? Because I think we know what the lifestyle of the top cricketers or top footballers, or even now the javelin throwers, the athletes who run track. We have a fair bit of idea, if not everything. So we would like to know how does your day start, and what happens after that? Well, I have two answers to this. Yeah. If we talk about my on-season schedule, my day usually starts around either 7 or 7:30. I hop into a shower, really freshen up, grab a nice healthy breakfast, high protein, high carbs. I power up for the first half of my day in a very, very systematic manner. I'll start by putting in a few laps behind the racing simulator to just get my brain hand-eye coordination warmed up. Alright, so you have a simulator as well? Yes, for racing drivers it is essential to have some sort of an equipment at home that has your muscle memory intact in terms of hand-eye coordination and your reflexes. For those who don't know, a simulator is something set up at home where you have, Yes. if you could explain, you'd explain Oh yeah, it better. so a typical racing simulator will have a steering wheel with force feedback. Yeah. It'll have a set of pedals where you have accelerator, brake and a clutch. The simulator is actually connected to a computer system
It could also be connected to a PlayStation, and there are these dedicated softwares like Assetto Corsa, iRacing, R Factor, Right. which are able to, which are compatible with the racing simulators, the machinery, and they provide you real-time force feedback of how a car will behave while turning, entering a corner, accelerating, and braking. Got it. And it actually translates in terms of real-time conversion from what you put into the simulator and what you can experience on screen in form of a car giving you feedback. Got it. So that is a very, I would say, relatable way in which an athlete, a motorsport athlete, can actually have access to training his muscle memory, training his reflexes, training his hand-eye coordination, training. There are vision exercises that play a major role in terms of training your brain of how to anticipate a corner. Yeah. There are different exercises. There's a lot of physics involved in determining what is the most ideal and appropriate way to go around a corner, how to maximize corner entry, mid-corner phase, exit phase. There's so much physics to it. It itself is like a big subject. Definitely. So a racing simulator plays a very good supportive role in terms of enabling us motorsport athletes to flex our muscles early in the day to kickstart the day. Yeah. What I would typically do after my training session is I would just have a small debrief, figure out the points, and then plan for my important session which follows in the second half of the day. So morning is usually like a warm-up. You don't read too much into the morning sessions. You just actually put in a few laps, just bring back your rhythm from yesterday, and then you sit down, gather your thoughts, and you plan for today's session. Got it. What are you going to do? Are you going to focus on corner entry? Are you going to focus on mid corner? Are you going to focus on exits? Are you going to focus on braking? Are you going to focus on a different car setup? Are you going to make the car slide a little? Are you going to make the car slide while entering the corner or while exiting the corner? Then there are different theoretical concepts, a bunch of different really interesting concepts in terms of how you can carry maximum grip, maximum speed through a corner. So you devise the strategy, what is it that you're going to practice on today? And then you sketch out what your plan is going to be for X number of laps. So what I usually try to do is I start with single digit number of laps and then I go into double digit laps. I try to work on my skill and then I work on my endurance. Then I try to work on the skill and then the endurance, and then eventually reach a point after a few weeks of training that you have a balance of both. You have a good amount of skill along with good amount of endurance. And then what you actually, the algorithm works is good amount of skill and endurance actually results into consistency. And I think that's a really important thing. So my typical day starts like that. Evenings are usually for workouts. Perhaps a lot of people think driving a car fast does not require you to be fit. No, exactly. I mean, this is what was going through my mind as you were speaking. Like, I thought racing is, it's all about the car and the driver can go in, sit with the belly as well. Like, what's the difference? But clearly there's a big difference. Of course. I mean, look, you can be fit as the fittest person around. You can be unfit as the unfittest person around. Yeah. But in reality, motorsport is a very physical sport. Yeah. You experience high amounts of dehydration. You perspire a lot, so there's a lot of sweat. And when there's a lot of sweat, your muscles are actually getting the water out. So the mind-muscle connection actually takes a hit. Your hand-eye coordination takes a hit. When there is less water, less hydration in your body, your brain functions take a hit. The beauty of motorsport has always been that you're not trying to score a run or a goal. You're not fighting for a game point. There is no match point. You're literally fighting in milliseconds and microseconds. Yeah. And when you talk milliseconds and microseconds, there's no second chance. There's no time for you. Like for example, you're batting on 99, and the next ball is going to be from the strike bowlers, right? And then you can just take a breather and walk around the crease a little bit, gather your thoughts, breathe, and then come back to the crease after you gather your thoughts, and then execute your shot, and then maybe get the next run and complete your 100. While racing, if you're in the qualifying and you're putting a bomb lap in, you don't get second chances. So your fitness, it's not that you got to get fit and then get into a race car. You got to get fit, stay fit, condition it, then get into a race car. And then is when your mind and body is going to be in a good cohesive manner, work towards you achieving your goals in a race car. So one of my mentors is 8-time national champion, Mr. Raymond Banaji. He's always mentioned this, and I've learned this lesson since the first time I heard him say these words in 2015. He's like, fast drivers do not necessarily win championships, but fittest drivers do. Yeah. And that's one of the most important lessons that I learned almost a decade ago from Mr. Banaji, and that has still guided me for years to come, and it will still guide me. So, like for our listeners, so what is the fitness routine that you follow? So what do you usually do? For racing drivers, you cannot have
a lot of muscle on your body. Got it. Because too much muscle means you need too much body water Might to stiffen up have a have like a smooth functioning. You need to have a balance of good stamina, endurance. You need to have decent amount of strength. You need to have very good mobility and flexibility. You need to have a very strong core. Core, definitely. Because the G forces that you tackle. The energy transfer limb to Yes. So essentially, if you see, right, the closer you go to the ground in a race car, if you're karting is the most physical because it's so closer to the ground. So the G forces are really extreme. But as you go above the ground, the G forces get a little diluted. Correct. So That's of course, why all these F1 cars are so. they're so low. They're so low. I mean, to give you a brief idea about what a F1 car is capable of, those wings you see in the front and rear of the car, they're capable of creating down forces north of 100 kilos at very low speeds. You know what I mean? So. Not really. Could you explain? So yeah, I mean, it's a pretty cool looking thing. Like I mean, it's very exciting, and it's. I mean, but some of the terms are just going over my head, and I've never been good at playing bouncers anyway. So. Alright, so I'll give you a few hook shots. Yeah. So you see a wing behind a race car, right? Like you see something like this and something like this. It's curated, और उसका angle like determine किया जाता है. There's a typical angle depending on where you're racing the car. Okay. इस एंगल को आप जितना खड़ा करोगे, जितना अगेंस्ट द एयर करोगे, उतना पीछे एयर वो विंग को हिट करेगा और वो विंग को नीचे प्रेस करेगा हाई स्पीड्स पे. द एयर इज कॉन्स्टेंटली गोइंग, राइट? So that will slow a car down? Yes. Yeah. That will slow a car down, but the benefit you get is more grip. Okay, you get more grip. Got it? Got it. So the benefit of grip will help you turn faster. Okay. And suppose if there's a 90-degree turn, without a wing you can take it at 60 kilometers an hour. Okay. With a wing you can take it at 90 kilometers an hour. Okay. Yeah. Because the wing is pushing the rear wheels down. तो जो रबर होता है टायर का वो आपके रेस ट्रैक में ज्यादा दबके चलता है. जब दबके चलता है तो कार स्केट नहीं होने वाली है. So that it's called as downforce in racing language. So the wing will generate downforce. The downforce will actually transfer the weight onto the wheels and tires. And the tires will generate grip through the rubber onto the racetrack, and that's how you can turn. So is this what we call DRS in racing? DRS एक evolved version है wings का. जो rear wing होता है वो जब DRS off होता है तब rear wing ऐसा है जो air को restrict कर रहा है and which is letting the car push down onto the racetrack. पर DRS जब एक्टिव होता है तब ये फ्लैप पैरेलल टू द ग्राउंड हो जाता है. Right. तो जो एयर वो रेजिस्ट कर रहा था वो रेजिस्ट नहीं करेगा अभी. द एयर विल गो स्ट्रेट. This will go faster now. So the car will go faster. That's why DRS सिर्फ स्ट्रेट लाइन में एक्टिव होता है. Yes. So DRS is the evolution of the rear wing, which was basically the purpose was DRS was to give a person a fighting chance to battle out the car in the front. It was to increase overtaking. It was to give like a stronger straight line speed, a higher straight line speed, so on and so forth. So I'm guessing that all this, when you're going up with so much speed against so much resistance, and in a race, once it starts, it doesn't stop, right? Yeah. Like you mentioned, in cricket we have time to reset, or in football also, ball goes out or something or the other happens, you can take a breather. Yeah. But once a race starts, it ends only once it ends. Yeah, right? once the flag drops. And even pit stops, I think, are very hectic. Yeah. That's not called a breather. I don't feel that's a breather, even though it looks like one, but. Oh my god, the pit stops are just crazy when you look at them. So there's no real breather in this sport. So it must take a lot of toll on the body. So there must have been some injuries as well. There might have been some lows, when you felt that your body wasn't keeping up with the car. And like, would you like to share something about that? So I wouldn't say there are injuries while you're driving. I wouldn't say there are injuries as a part of these never pausing sport. I think the challenge is more psychological. Right. The ability to push the car to the limits, lap after lap, lap after lap, lap after lap. The ability to defend your racing position when someone else is attacking, who seems to have an advantage. Yeah. The ability to attack a car in front of you who seems to be faster than you, and you have to figure out their mistakes while you're racing them. So while you're taking care of you being fast or trying to go faster each lap, you're also absorbing all the information that you can see visually from your competitor in front of you. You need to line up a move. Now what I mean by line up a move is you observe the driver in front of you, you see what kind of errors that person is making, and then you line up an attack on that driver during that particular turn because you've already deciphered that this driver is making the same mistake on this corner. Right. So a few corners before that corner, agle lap mein, you start pressurizing them a little more. And when you pressurize them a little more, there's a higher chance that the person will get defensive or will make a bigger mistake. And that's when you capitalize. They can't handle the... Exactly. And the beauty of motorsport is you're doing all of this while you're fighting in milliseconds.
And you're at top speeds of? You're going about 150, 170, you're touching 200 kilometers an hour. In fact, when we raced in Delhi, I think we go up to 210 or 215 kilometers an hour on the back straight. Right. Which is just incredible, man. Like, I mean, you reach a level where you're operating not only at super high speeds, but your brain is working like a supercomputer. You're also aware, I mean, of course, I wouldn't want to go too deep and confuse the audience, but you also need to be aware कि आपके टायर्स क्या कर रहे हैं, आपके टायर्स ओवरहीट हो रहे हैं, आपके टायर प्रेशर ज़्यादा है. Tires play a very big part, right? So tires are the only contact that you have with the surface, right? So अगर आप किसी भी टायर को इमेजिन करोगे तो सामने से ऐसा गोल दिखता है, पर उसका एक छोटा सा लाइन है जो ट्रैक को टच हुआ है, और ऐसी सिर्फ 4 लाइन्स है, which is the reason your car is in contact with the track. ये लाइन जो है इसका आप विड्थ समझ लो 1 फीट है. जैसे ही टायर प्रेशर बढ़ते जाएगा, ये जो 1 इंच का विड्थ है और 1 फीट का लेंथ है, ये आधा इंच हो जाएगा. और अगर बहुत ज्यादा एयर प्रेशर बढ़ गया तो 1 फीट से कम होके 10 इंच पे आ जाएगा. तो जैसे आपका कॉन्टैक्ट पैच कम होते जाता है, आपका ग्रिप लेवल्स ड्रॉप होता है. जैसे ग्रिप लेवल्स ड्रॉप होता है, आपको थोड़ा पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है. जैसे ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, आपका लैप टाइम स्लो हो जाएगा, पीछे का कॉम्पिटिटर आपको कैच कर लेगा. So during a race, you have to be very careful about how smoothly you are driving the car. Yeah, अगर आप aggressively brake कर रहे हो, aggressively turn कर रहे हो, टायर skid हो रहे हैं, जो हमने so usually लोगों के सामने impression होता है कि racing is all about going fast, braking fast, वो टायर का आवाज आना चाहिए टर्न मारते हुए, वो फास्ट एंड फ्यूरियस में 200-300 बार गियर बदलते हैं, ऐसा कुछ करना है, वो ड्रिफ्ट करना है, पीछे से आग निकलेगा. All of these are amazing ways to go slow. Yeah. If I could write a book, I would write a book of these amazing ways to go slow and title it as something that you see in Fast and Furious. But real world racing is different. यहाँ पे एक अलग लेवल का सर्जिकल प्रिसीजन लगता है. यहाँ पे अगर आपके टायर्स का आवाज आ रहा है, you're going slow. यहाँ पे अगर आप एक मेनियाक की तरह ब्रेक कर रहे हो, you're going slow. यहाँ पे अगर आप बहुत abruptly और बहुत erratically टर्न कर रहे हो, स्टीयरिंग व्हील इस तरह से टर्न कर रहे हो, you're going slow. You're breaking the grip. This is called as breaking the grip. आपके टायर्स में एक फिजिकल लेवल ऑफ एबिलिटी होता है कि जो वो रेजिस्ट कर सकते हैं before they start skidding, before they start losing grip and skating out, right? With a lot of practice, with a lot of dedication, a lot of attention and a lot of experience, you realize when the grip is going to break. और आप वहाँ पे ऑपरेट करना शुरू करते हो. And that is called as making the car slide at your will. Do you have the expertise to slide the car while you enter the corner? Or do you have the ability to slide the car while you exit the corner? और slide इतना calculated रहता है कि वहाँ पे under rotation is less than 3%, 4%. मैं बहुत ज़्यादा technical बोल रहा हूँ. I don't want to confuse you guys, but the idea is to not do anything over, not do anything under. There's a very brief window जहाँ पे आपको operate करना होता है रेस कार में. और आप अगर उसके अंदर operate करोगे तो you will be the fastest. Got it. So a lot of things have to come together at the right moment. Have to click at the same time 100%. for you to be a winner that 100%, day, right? 100%. So I think it's very clear that you put in a lot of hard work into this, but sometimes in sports we see that even when we feel that we're at the top of our game, the results might not say so. So have you faced such situations, and how has it been? How have you dealt with it? Yes. In fact, इसके पीछे एक बहुत interesting couple of experiences हैं मेरे, which I would like to just try to share in a brief manner. 2019 का championship काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है मेरे लिए. 2019 की शुरुआत से ही I was one of the top, like one of the quickest drivers on the grid, and I had some fantastic competition. Like some of the drivers on my grid were really, really great competitors with the amount of hard work they've put in. Incredible amount of individuals off the track, great competitors on track. इस championship में we went into the third race weekend in Chennai, जो हो रहा था अगस्त के मंथ में. मानसून चल रहे थे, it was raining. एक वेट रेस था जो रिवर्स ग्रिड रेस के बाद था. जो फर्स्ट रेस था चैंपियनशिप, उस वीकेंड का फर्स्ट रेस था, वो मैंने आई थिंक 3rd फिनिश किया था, मैं पोडियम पे आया था. और नेक्स्ट रेस जो होता है वो रिवर्स ग्रिड कहा जाता है. सो टॉप से रिवर्स ग्रिड में ऐसा होता है कि नेशनल चैंपियनशिप के रेगुलेशंस के हिसाब से जो पहली रेस होती है वो क्वालिफाइंग के टाइम के हिसाब से शुरू की जाती है. जो सबसे फास्टेस्ट टाइम डालता है वो फर्स्ट पोजिशन पे रेस शुरू करेगा. उससे 2nd, 3rd, 4th, 5th ऑल द वे टिल द लास्ट कार इज व्हाट डिटरमाइंस द ग्रिड फॉर द फर्स्ट रेस. अभी फर्स्ट रेस की जो फिनिशिंग ऑर्डर होता है उसमें से जो पहले 12 ड्राइवर्स हैं उनको रिवर्स किया जाता है. अच्छा, वो आ गया. 12th ड्राइवर विल कम फर्स्ट, स्टार्ट द रेस फर्स्ट, एंड फर्स्ट ड्राइवर जो आए वो 12th स्टार्ट करे. ओके. बिकॉज आई फिनिश्ड 3rd, आई स्टार्टेड 10th.
सेकेंड रेस के पहले इतनी इंसेन बारिश हो रही थी चेन्नई के रेस ट्रैक पे कि ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि विल स्टार्ट द रेस बिहाइंड अ सेफ्टी कार। और मैं मेरे जोन में था, आई वाज जस्ट वी स्पोक अबाउट जोन राइट, सो मैं मेरे जोन में था एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दिस रिदम कि जब अभी भी अब तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है रेसिंग और कार चलाने के बारे में, एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द विंडो व्हेन इट्स अ वेट रेस। Practicing is good. The practice, in fact, the physical rules, the physics and all is very different. Things change, right? A lot of things change, and the crazy part is the power of the car remains the same, but the track becomes like a ice surface. जहाँ पर भी आपकी रेसिंग लाइन है, मतलब रेसिंग लाइन उसे कहा जाता है जहाँ पे आप गाड़ी चलाओगे, जिस लाइन पे आप कार चलाओगे ट्रैक पे, जहाँ से आप फास्टेस्ट जा सकते हो, कम से कम ब्रेक लगा के ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कैरी कर सकते हो, उसको रेसिंग लाइन कहा जाता है रेस ट्रैक पर। रेसिंग लाइन पे जब बारिश गिरती है तो उस पे जो रबर रहता है, जब वो रबर कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, इट बिकम्स एज स्लिपरी एज आइस। Got it. सो आपको एकदम काउंटर इंट्यूटिव ड्राइविंग करना पड़ता है वेट रेस में। सो यू कैन नॉट ड्राइव ऑन द रेसिंग लाइन, यू हैव टू ड्राइव ऑफ द So रेसिंग it's लाइन। pure instincts. It's so much instinctive because your brain has your sensitivity of your brain and your full body has to be dialed up to 11 to determine कि grip कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे मैं ब्रेक कर सकता हूँ ज़्यादा लेट, कहाँ पे मैं टर्न कर सकता हूँ, कौन सी लाइन में फॉलो कर सकता हूँ जहाँ से मैं ज़्यादा स्पीड कैरी करूँ। और ये जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद डेवलप होते हैं। और प्रैक्टिस के आगे आता है कंडीशनिंग, कि आपने सपोज 600 घंटे का प्रैक्टिस टाइम दे दिया है और 600 से 800 जो अगले 200 घंटे हैं ना, इसमें आप सिर्फ कंडीशन कर रहे हो खुद को टू स्टे एंड ऑपरेट एट द हाई लेवल। जब आपने वो किया होता है ना, तो आपका एक सेंसरी फीडबैक मैकेनिज्म बहुत अलग लेवल पे ऑपरेट करने लगता है एंड योर अडेप्टेबिलिटी गोज अप, योर अडेप्टेबिलिटी शूट्स अप। तो 2019 में काफ़ी प्रिपरेशन मैंने किया था, और ये वेट रेस में इसी तरह का कुछ लॉजिक हमें लगाना पड़ा कि क्रेजी अमाउंट ऑफ रेन इज हैपनिंग। उसके ऊपर से हम स्टार्टिंग 10th, तो मेरे आगे 9 कार्स है और मेरे पीछे 10 कार्स है। सो मतलब रेसिंग में कैसे होता है, एवरीवनस ट्राइंग टू गो एज फास्ट एज बीच में डाल दिया, बीच में सैंडविच में घुस गया यार, मतलब बस सोच रहा था अभी क्या करूं। बट द आइडिया वाज टू स्टे फोकस्ड, द आइडिया वाज टू मेक अ डिसीजन बिकॉज एवरीवन एल्स माइट डिसाइड टू प्ले सेफ, बट इफ यू वांट टू विन द चैंपियनशिप यू गोना हैव टू टेक द रिस्क। You gotta take the risk, right? Definitely. So based on those objectives I determined a strategy, and then the idea was to just drive with the feel. Yeah. You know, and when you start playing safe, what happens is you're more aware of your surroundings. But when you want to take the risk, you're not aware of the surroundings, but you're aware of your goal. When you play safe, I feel in fact that you're not, if you're not in a natural state, your muscles tend to stiffen up and you don't do the 100%. things 100%. as naturally. So I think Rightly said, you've yeah. got to be natural and be out there relaxed. That's when you perform your best, I feel. Yeah, but again, right, so rightly said, but जब वो एक्चुअल सिचुएशन में आप होते हो, वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ 20 अदर कॉम्पिटिटर्स, एंड मोटर स्पोर्ट एज वी ऑल नो इज अ डेंजरस स्पोर्ट, could be very risky sometimes if not paid attention to. तो यहाँ पे एक mental approach बहुत ज़रूरी हो जाता है कि what is your goal, what are you here for. When you start playing safe, you are more aware of the surroundings and you are focusing more on your competitors' cars ahead and behind you rather than making a move and figuring out, I can get more grip on this part of the track, I can go faster in this, I can get back on throttle before. ये सारी चीज़ों का एक पर्सपेक्टिव डेवलप होने के लिए काफ़ी ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस। सो 2019 में यही हुआ। अगस्त में हमारा जो सेकंड रेस था वो सेफ्टी कार के पीछे स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड 10th, आई थिंक 7 लैप्स का रेस था। फ्रॉम 10th आई वाज फर्स्ट बाय द एंड ऑफ 3 लैप्स। ओके, आफ्टर 3 लैप्स मैं फर्स्ट थे। ओके, और 4th लैप तक मैंने 5 से 7 सेकंड की लीड ले ली थी, which is a lot. Which is a lot. I was my lap times were 5 seconds faster than any other car on the track. जो हम सब एक कैटेगरी में होते हुए भी. What was different? There was something different that was working for me in that moment during that race, which was letting me go faster than anybody else. और यहाँ पे वो काउंटर इंट्यूटिव चीज़ की बैकफायर हो गई। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे साथ हमेशा रेस वीकेंड्स पे आता था, वो पिटवॉल से आके मुझे बोल रहा थी तू स्लो चला। ही इज वेविंग एट मी कि स्लो डाउन, यू आर गोइंग टू फास्ट एंड वी डोंट नीड टू रिस्क इट, वी ऑलरेडी फर्स्ट, वी लीडिंग द चैंपियनशिप, रिलैक्स। तो मैंने उसका वो बॉडी लैंग्वेज का जो साइन था वो किसी तरह से डिसाइफर किया, एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स टाइम टू टेक इट इजी। मुझे शायद लगा कि गाड़ी में कुछ एरर आ रहा है, मेरी गाड़ी डैमेज हुई है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ही आस्किंग टू ड्राइव स्लो। और आगे एक राइट टर्न था, उसके आगे के राइट टर्न में मैंने बिकॉज स्लो चलाना था थोड़ा जल्दी ब्रेक मार दिया, ब्रेक्स लॉक हो गए और मैं 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सीधा टायर वॉल में घुस गया एंड आई क्रैश्ड।
वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा था बिकॉज दिस इज अ टायर वॉल. मतलब आप 10 टायर की ऐसी वॉल ऊंची इमेजिन कर लो जो ग्राउंड से अराउंड 6 फीट हाई रहेगी. और तुम्हारी कार सीधी 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सीधा हेड ऑन कोलाइड कर रही है उसमें. और इंजन तो सामने होता है. यू कैन जस्ट इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज. That was a devastating moment. My body went through a shock with that amount of impact. जब मैं बाहर उतरा मैंने कार देखी तो my championship was almost over because I was like अगर ये कार रिपेयर नहीं हुई ये रेस में तो 0 पॉइंट्स है. अगली रेस में कर नहीं पाऊंगा जो 3 घंटे बाद है. तो मतलब जो चैंपियनशिप जीतने के हमने इरादे रखे थे वो तो 0 हो गए अभी. रेस खत्म हुई हम वापस गए पर वहां तक मैंने छोड़ा नहीं था. आई डिड नॉट गिव अप. जो मेडिकल कार मुझे पिक करने आई थी दैट वाज ड्रिवन बाय अ प्रीवियस नेशनल चैंपियन. ओके. उन्होंने मुझे पिक करने के बाद जो बाकी का बचा हुआ लैप चलाई ना कार वो मैंने सब ठीक से देख लिया था कि हाउ इज दिस पर्सन ड्राइविंग इट डिफरेंटली. कुछ नोट्स बना लिए. मेंटली एथलीट हूं ना भूल नहीं सकता ये सारी चीजें. I mean that's commendable also. Even if you are an athlete, there are many athletes, but after you've just had an accident and of such magnitude, like when you in an accident, first of few seconds you don't even realize what happens. You think, and then slowly things come to you that okay, shit, this has happened. Yeah. And in that state also you're making notes. Man, what's wrong with you? I mean, there's something right with you. I think just to focus on this part, ना जब मेरा कार का brakes lock हुआ था, I was about 70-80 meters away from the tire wall. Got it. और जब brakes lock होते हैं ना, it's also called as aquaplaning. Okay. So essentially आपके टायर के और रेस ट्रैक के बीच में पानी आ जाता है, and your car is just sliding over water. Okay. Okay. Because of aquaplaning, आपका steering control पूरा चला जाता है. Your car cannot turn. Because of aquaplaning, the engine shuts off because the RPM is 0, the wheels are not moving. इंजन बंद हो गया, स्टीयरिंग का कंट्रोल चला गया और एक्वाप्लेन हो रही तो हैंड ब्रेक भी नहीं चल रहा था. You're just waiting for मैंने हाँ तो right from the moment my car aquaplaned to the moment my car hit the barrier, I think I had tried 6 different maneuvers to take control of the car. मैंने डाउनशिफ्ट किए कुछ भी नहीं हुआ, एक्सेलरेट किया कुछ नहीं हुआ, ब्रेक्स पे प्रेस किया कुछ नहीं हुआ, हैंड ब्रेक खींचा कुछ नहीं हुआ, हैंड ब्रेक छोड़ के हैंड ब्रेक खींच के स्टीयरिंग टर्न किया ताकि एटलीस्ट माई रेयर ऑफ द कार हिट्स द वॉल. ये इंजन बचाना था मुझे. साइड इम्पैक्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेयर इम्पैक्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रंटल इम्पैक्ट अवॉइड करना था बिकॉज इंजन डैमेज नहीं होना चाहिए. बट नो मैटर व्हाट आई ट्राइड टू डू द कार जस्ट डिड नॉट करेक्ट इट्स ट्रेजेक्टरी एंड इट जस्ट वेंट स्ट्रेट. तो एक वो डिफीटिंग मोमेंट हो जाता है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है. क्वेश्चन, सो डू यू फील दैट इफ योर फ्रेंड हैड नॉट गिवन यू द सिग्नल, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव हैपेंड? वुड दिस एक्सीडेंट हैव बीन अवॉइडेड? Have you ever thought about it? I'm sure you must have thought about it. Actually कभी जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि उसके बाद जो वो बताना बाकी है अभी. Okay, cool. So yeah man, I mean I sat in the medical car, I was escorted back to the pits and कोई और रेस जीत गया था. All my competitors were just looking at oh shit car number 7 Pratik का गाड़ी क्रैश हुआ, was sort of leading the championship. तो यार देख सब जानते हैं कि everybody cares for each other, but competitors will be happy ना he's out of the race. जो है वो है. But I was concerned कि अभी अगले रेस का क्या होना है. The team full power because I was leading the championship. They of course tried their level best to put my car together. अगली रेस I think 2.5 से 3 घंटे में थी और time is running against us. The car is like literally car is hanging in the air like this. और मैं बस कार को देख रहा हूँ और मैं मेरे सपना सोच रहा था कि यार चैंपियन बनना था तुझे. सही में हो रहा है. ये क्या हो रहा है? गाड़ी लटकी पड़ी है और दूसरी गाड़ी तो मिलनी नहीं है. अब क्या करे? ऊपर से और टेंशन की जो डैमेज हुआ उसका खर्चा मुझे ही लेना है. अरे ये मोटर स्पोर्ट का उसूल है. इसको कोई नहीं चेंज कर सकता. हम देख रहे हैं कार को, मैकेनिक्स कार पे काम कर रहे हैं. मेरा दोस्त कहीं नजर ना आए. गॉड नोज वेयर ही वाज ऑफ कोर्स ट्राइंग टू डू फिगर समथिंग आउट. और उस बार जो वो अगले 1 से 1.5 घंटे में जो हुआ मेरे लाइफ में वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल था क्योंकि वो 1-1.5 घंटे में मेरे सामने ना हर एक वो मोमेंट जा रहा था जब मैंने प्रैक्टिस करी है. हर एक मोमेंट जा रहा था जब मैंने खुद को चैलेंज करा है, जब मैंने छोटी छोटी विक्ट्रीज कैप्चर की है मेरे ट्रेनिंग डेज में. ये सब चीज़ें मुझे दिख रही थी आंखों के सामने. और मुझे ये भी दिख रहा था कि ये गाड़ी ना रिपेयर नहीं होने वाली. द अमाउंट ऑफ डैमेज इट हैड. इमेजिन 100 के स्पीड में घुस गई यार. आइडिया लग जाता है देख के. लग जाता है कुछ नहीं होना है. पर जैसे मैं देखते जा रहा था मेरी अकेले की कार थी जिसपे 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं. अच्छा. कितने सारे पार्ट्स नए चेंज हुए थे. 2.5 घंटे में रेस थी. गाड़ी रिपेयर करते करते आई थिंक 1 घंटे पे रेस आ गई. गाड़ी अभी भी लटकी पड़ी है. वी डोंट नो इफ इट्स गोना वर्क और नॉट वर्क. क्या क्या काम चल रहे हैं, कौन से पार्ट्स चेंज हो रहे हैं मुझे भी पता नहीं. सस्पेंशन चेंज हो रहा है, ब्रेक्स चेंज हो रहे हैं, टायर्स चेंज हो रहे हैं, व्हील्स चेंज हो रहे हैं, बारिश पड़ी जा रही है, ड्राई भी हो रहा है, सनलाइट भी आ रहा है, ट्रैक कंडीशन चेंज हो रही है.
और मेरे कॉम्पिटिटर्स उनका रिजीम फॉलो कर रहे हैं। कोई जाके खाना खा रहा है, कोई जाके मस्त एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, कोई जाके रेस डिस्कस कर रहा है, कोई जाके प्लान बना रहा है अगली रेस का क्या करना है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पता भी नहीं कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा कि नहीं अगली रेस में। जो इमोशंस के थ्रू मैं गया था वो 2 घंटों में, मुझे रोना आ रहा था, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, सेल्फ सिंपैथी आ रही थी, साबोटाज वाला फीलिंग आ रहा था, लोग आके पिटी दे रहे थे कि अरे यार बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। उस टाइम तो और बुरा लगता है कोई ऐसे करता है तो। और फिर तू खुद को देख रहा है और तू खुद को देख भी नहीं पा रहा है एसेंशियली। और फिर मेरे हाथ में मेरा हेलमेट था। मेरे हेलमेट की ना एक स्टोरी है। ये बेसिक सिंपल व्हाइट कलर का हेलमेट है, इस पे कोई फैंसी चीज़ नहीं है। मेरे पास उतना बजट नहीं होता था कभी कुछ हेलमेट को पेंट वेंट करवा लूँ कुछ फैंसी तरह से। तो याद है 2010s में सचिन तेंदुलकर इंडियन फ्लैग लगाता था अपने हेलमेट पे, काफ़ी सही लगता था। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कभी कुछ ऐसा करेंगे कि अपने भी हेलमेट पे इंडिया का फ्लैग लगे या फिर अपने क्लोथ्स पे इंडिया का फ्लैग लगे, इंडिया के लेवल पे कुछ तो करना है। तो मैंने मेरे हेलमेट पे छोटा सा ऐसे सिल्वर कलर का स्टिकर लगाया था और उसके बीच में इंडिया का फ्लैग लगाया था। हेलमेट पकड़ के देख रहा हूँ फ्लैग को। उस दिन वो तिरंगे के तीनों रंग बहुत अलग दिख रहे थे मुझे। अच्छा। वो हर एक कलर में ना मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस दिख रही थी, किसी कलर में मेरी डिफीट दिख रही थी, किसी कलर में मेरा हार्डवर्क दिख रहा था, किसी कलर में वो 4 साल का बच्चा दिख रहा था जो मम्मी के स्विंग मशीन पे खेल रहा है, जिसने कुछ ड्रीम देखा है। और फिर ऊपर देखो तो गाड़ी लटकी पड़ी है। टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट इन द मिडल ऑफ अ कॉम्पिटिशन, वहाँ पे अभी मोटर स्पोर्ट में ऐसा भी नहीं ना यार कि मॉम डैड साथ में हो, स्कूल के टाइम आ जाए बच्चा मेरा ठीक है, कुछ नहीं, कोई नहीं, अगले साल वापस, कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए आपको। ऑल अलोन, यू आर ऑल अलोन देयर, यू हैव टू गैदर योरसेल्फ। टूटे पड़े हो, गैदर कर लो, रीग्रुप, रीस्ट्रक्चर। और फिर मेरे जो टीम के ऑफिशियल्स थे वो मुझे बोल रहे थे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, वी कैन नॉट कमिट बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि तेरी गाड़ी रिपेयर हो जाए रेस के लिए। एज अ कॉम्पिटिटर ऑल यू कैन डू इज थैंक देम फॉर देयर बेस्ट शॉट, राइट। पर पता नहीं होने वाला है, आपके हाथ में ही नहीं है उसका। और फिर आखिरी के जो 40 मिनट थे ना रेस शुरू होने के पहले, वहां पे मैजिक शुरू हो गया। अच्छा। और ये जो मैजिक हुआ है ना, ये शायद ये मैजिक ही कहा जाए। ओके। जो टीम डायरेक्टर थे लीग के, उन्होंने मुझे कहा तू रेडी हो जा, मैं देखता हूँ रेस 30 मिनट डिले कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा। ये मैंने पूछा नहीं, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये हुआ। बारिश वारिश आ रही थी तो काफी डिलेड चल रहा था शेड्यूल। सो हाउ इट वर्क टू माय एडवांटेज इज समथिंग मे बी आई विल नेवर नो। यार फिर टाइम ऐसा चलते गया, मेरी गाड़ी अभी भी 2 पहिए पे खड़ी है, लटकी पड़ी है, काम कर रहे हैं, ये वो सब चेंज कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं गाड़ी शुरू होगी कि नहीं आफ्टर दे पुट ऑल दीस थिंग्स टुगेदर। और बजर बज गया, पिट लेन ग्रीन हो गई, सब कॉम्पिटिटर्स की गाड़ियाँ बाहर जा रही है। जिंदगी में पहली बार इतना खाली पिट लेन देखा है मैंने, सिर्फ मेरी गाड़ी वहाँ पे और कोई गाड़ी नहीं है वहाँ पे, सब चले गए रेस ट्रैक पे लाइन अप होने के लिए, रेस के लिए। और मैं वहाँ पे सुनसान खड़ा हूँ, रेस ट्रैक पे बैठा हूँ, और किसी ने मुझे बोला गाड़ी में बैठ, इट्स टाइम टू बकल अप, लाइक बेल्ट अप, सूट अप एंड बेल्ट अप। तो मैं सब कर रहा हूँ, कैसे तो भी पानी वानी पी रहा हूँ, वो लगता है ना अपने को पानी पी के बैठा हूँ गाड़ी में। तो आई सूटेड अप, मैं हेलमेट वेलमेट पहन के बेल्ट वेल्ट लगाई, बैठ गया गाड़ी में, और किसी ने बोला स्टार्ट कर गाड़ी, और मैं भूल गया बटन किधर है। आई वाज सो डिस्कनेक्टेड। और डर जाता है यार इंसान ऐसे वक्त पे, पता नहीं चलता क्या करे। एम्बिशन जितना है उतना सेंसिटिविटी भी होता ही है। मैं तो आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, एंड मे बी बिकॉज आई एम सेंसिटिव आई गेट सो इंस्पायर्ड इजीली। बैगेज भी है पर एडवांटेज भी है, दैट्स लाइफ। हम गाड़ी में बैठ गए, किसी ने गाड़ी स्टार्ट करी, और फिर उन्होंने बोला देख सब तो लगा दिया है हमने, गाड़ी टेस्ट करने का टाइम नहीं है, पिट लेन ग्रीन है, जल्दी से गाड़ी निकाल, जो भी है आउटलैप में देख ले, गाड़ी चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, चलो। उन्होंने गाड़ी नीचे डाली, 10-20 लोग गाड़ी की साइड में खड़े क्लैप कर रहे, गाड़ी पैचअप हो गई, अभी भेज दो इसको बाहर। काफी लोगों ने देखा था कि क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में, क्या चल रहा था? अभी तो बैठ के ऑनेस्ट वो अर्जेंसी थी ना। हाँ। जल्दी बाहर निकल, पिट लेन का ग्रीन से रेड हो गया। हाँ। तो तू रेस ग्रिड से शुरू नहीं करेगा, पिट लेन से शुरू करेगा। और पिट लेन से शुरू करना मतलब रेस शुरू होती है, सारी कार्स चली जाती है, और फिर तुम ट्रैक ज्वाइन करते हो आखिरी में, वो नहीं होने देना था। और आई थिंक दैट रेस आई वाज स्टार्टिंग 5th। Okay, so you definitely can't risk it. I didn't want to risk it, right? ट्रैक कंडीशंस ड्राई होते जा रहे थे, टायर्स भी हमने पुराने डाले हुए थे, तो it was a crazy kick, it was chaos. तो जितना जल्दी में मैंने बाहर निकाल दी गाड़ी, I just had to make sure कि जो ग्रीन लाइट है ना, वो रेड होने से पहले कार पास हो जाए पिट लेन से बाहर। मैंने व्हील स्पिन करके गाड़ी निकाली वहां से, निकाली, ग्रीन लाइट पास किया, I was like okay fine, didn't have time to feel fine also, I was like अभी कार चेक करो सही चल रहा है कि नहीं सब।
तो मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉम देयर इट टेक्स अबाउट रफली 2 minutes 10 seconds टू रीच द स्टार्टिंग ग्रिड. मैंने वो 2 मिनट 10 सेकंड मतलब 130 सेकंड मैंने कम से कम 20 अलग टाइप के मैन्यूवर्स ट्राई किए थे गाड़ी पे. मैंने जीरो मतलब फर्स्ट गियर से 6th गियर तक गियर शिफ्ट किए, 6 से वापस फर्स्ट पे आया, फर्स्ट से वापस 4th तक गया, 4th से सेकंड आया, सेकंड से 5th गया. ये 4-5 बार मैंने किया टू इंश्योर कि गियर बॉक्स चल रहा है. स्टीयरिंग व्हील मैन्यूवर्स किए टू इंश्योर कि स्टीयरिंग चल रहा है, सस्पेंशन चल रहा है, व्हील्स बराबर है, टायर प्रेशर्स बराबर है. ऑफ कोर्स तब तक मेरा दोस्त आ गया था, वाज हैंडलिंग द टायर प्रेशर्स एंड एवरीथिंग. और तब ये सब हो रहा था ना, तो जब गाड़ी पे काम चल रहा था तब मेरे को एक मोमेंट याद है जब मुझे मेरे ट्रेनर ने बताया था. मैं एक्चुअली जिम में ना कभी भी स्क्वाट्स करने से बहुत डरता था. मेरे में वो फियर था कि यार स्क्वाट्स में हैवी वेट लेके नीचे जाऊँ ना तो शायद कभी ऊपर ना आ पाऊँ. मेरे ट्रेनर ने मुझे एक बहुत सही चीज़ बताई थी. कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताया था, पर उन्होंने मुझे बस एक बार आके मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला कि यू नीड टू फाइट योर फियर्स, डोंट एंटरटेन योर फियर्स, फाइट देम. एंड ही लेफ्ट मी इन द जिम ट्रेनिंग सेशन. और 2 मिनट बाद आए थे. उसके बाद मैंने एक परफेक्ट स्क्वाट का सेट मारा था. और वो लर्निंग में जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा. तो व्हेन आई वाज डूइंग दिस मैन्यूवर्स आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू रिमाइंड माई सेल्फ टू फाइट माई फियर्स. ये सारे मैन्यूवर्स किए और मैं वापस आके ग्रेड में 5th पोजीशन पे लाइन अप हो गया. अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि गाड़ी चल रही है. अब क्या करना है मुझे? अब मुझे ये नहीं सोचना कि पिछली रेस में क्या हुआ है. अब मुझे ये नहीं सोचना है कि what my competitors are thinking. I don't have to think about anything else. This is my shot at bringing it all back. This is my shot. और मेरे आगे के जो 5 बंदे थे ना, जो 4 बंदे थे, I was 5th. वो 4 बंदों को मेरी ब्रेक लाइट दिखा के रहने वाला था इस रेस में. मैंने डिसाइड कर लिया था. मैंने बोला भाई बस कार चल जाए, बाकी तो तुम मतलब मैं अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा था तभी. वो रेस मैंने 5 सेकंड के लीड से जीती है. अच्छा. और जब मैंने वो रेस जीती थी ना, वो पिटलेन में का हर एक मैकेनिक बाहर आके सेलिब्रेट कर रहा था. वाह. जो लोग रेस देखने आए थे वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे कि यार ये बंदा, ये जो वेट रेस में 10वीं से फर्स्ट आया था 3rd लैप 3 लैप के अंदर, और जब बाद में क्रैश हुआ इतनी बड़ी लीड के बाद, उसने रिडेम्पशन दिखा दिया है. ही गॉट हिज रिडेम्पशन इन दिस रेस, स्टार्टिंग 5th फिनिशिंग 1st. ये सारे एक्सपीरियंसेस जो तुम्हें सिखा देते हैं ना, ये तुम्हारी लाइफ का कोर्स चेंज कर देते हैं. यू नो, शायद आप जा रहे हो रिवर साइड, you will end up on a mountain. तो वो कहावत है ना कि don't climb the mountain for the world to see you. Climb the top of the mountain so that you see the world differently. This was my experience of climbing a mountain. Definitely. I mean, I felt like I was there when you were describing it, and clearly I think the way what showed truly was, I think you really wanted it really bad. And वो कहावत, एक और कहावत है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है, which Paulo Coelho has said in English. This is a Hindi adaptation to it, but definitely I think you wanted it really bad. And even I was just trying to imagine, like, from your point of view, when you see your car is all hammered up and car लटकी पड़ी है जैसे आप कह रहे थे, और पता नहीं चलेगी, बाकी लोग अपने जोन में थे, अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे, एंड वो सब इतना उथल पुथल के बाद भी पता नहीं गाड़ी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद भी टू विन. आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई लव्ड hearing this whole experience. So this was one of the highs, I feel, right, in your sporting journey. But as an athlete, I know that there are times when things do not go. Yeah. Like over here, things did miraculously work out for you. मतलब सब चीज़ एट द एंड वो है अंत भला सब भला. अभी वो सब लग रहा है कि ठीक हुआ, मैं सीखा उससे. बट अगर आप नहीं जीते होते तो आपको शायद आपका थॉट प्रोसेस इस पूरे एक्सपीरियंस पे कुछ और होता. 100% है ना. 100% कि वाई मी, क्यों हुआ, ये भी होता वो होता, है ना. सो ऐसा हुआ है where things have not worked out and like. Yeah, I think ऐसा हुआ है. और ऐसा बहुत ही इंटेंस लेवल पे मेरे साथ हुआ है. 2019 में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप 2 पॉइंट से हारी थी, और मैं 19 के बाद एक वाइस चैम्पियन था ऑलमोस्ट 3 साल तक, जो मैं नहीं रहना चाहता था. Second place is not a good feeling. Second place is the first loser, no? Yeah, wait, it's not. उसका दर्द सिर्फ वो second place वाला ही शायद जान पाए. So 19 के बाद 20 में रेसिंग नहीं हुआ था. 2021 में रेसिंग वापस हो रहा था. और 21 में मैं एक बहुत ही खुन्नस वाले एटीट्यूड से आया था.
अच्छा. कि मुझे एक भी रेस नहीं छोड़नी है. मैं 2 पॉइंट से आ रहा था ना, इस बार मैं 200 पॉइंट से जीतना चाहता हूँ. इतना ज़्यादा लेवल ऑफ कमिटमेंट था मेरे पास. मैंने ज़िंदगी के 6 महीने कम्प्लीटली डेडिकेट कर दिए थे रेस प्रिपरेशन में. 2021 में मैं काफ़ी अमेजिंग लोगों को मिला. मेरी लाइफ में कुछ लोग बहुत कम वक्त के लिए आए थे पर बहुत अमेजिंग लोग थे. 21 का सीज़न शुरू बहुत सही हुआ था. विद इन द फर्स्ट 3 रेसेस आई won 2 रेसेस. आई वॉज किलिंग इट. एंड सडनली नेक्स्ट 4 रेसेस की 3 रेसेस में मेरी कार DNF हो गई. टेक्निकल इश्यूज. DNF means DNF का डेफिनेशन है डिड नॉट फिनिश. did not finish. Okay. डिड नॉट फिनिश मतलब आप पॉइंट स्कोर नहीं करते हो. Yeah. आप पॉइंट स्कोर नहीं करोगे मतलब नेशनल चैंपियनशिप के पॉइंट्स टैली में यू विल नॉट मूव अप द लैडर. Must be one of the worst feelings. माय गॉड. मतलब जब आपको पता है कि आपके पास वो पेस है, आपके पास वो कंसिस्टेंसी है, आपने हार्ड वर्क किया है और आपकी कार आपका साथ नहीं दे रही है. वर्स्ट फीलिंग. इट्स लाइक यू आर द बेस्ट स्वर्ड्समैन ऑन द प्लैनेट बट समवन टेक्स अवे योर स्वॉर्ड. यू नो, इट्स लाइक आप सबसे बेस्ट आर्चर हो दुनिया के, आपको बो दे दिया है, एरो नहीं मिला. दैट फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस हैपेंड एंड इट हैपेंड फॉर 3 consecutive रेस वीकेंड्स. आई वाज फ्रस्ट्रेटेड. मैंने कार में दिक्कत थी. मेरे कार का बूस्ट प्रेशर सेंसर होता है जो सेंसर इंजन को कमांड भेजता है कि अभी टर्बो शुरू करो, अभी पावर रिलीज करो इंजन में से. ठीक है. वो सेंसर फेल हो रहा था. अच्छा. 10 में से 4 रेसेस में वो सेंसर फेल होने की वजह से मैंने रेस ख़त्म नहीं की. उस चैम्पियनशिप के आखिर में मैंने मेरे पूरे रेसिंग करियर का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था. वर्स्ट ये बोलते हैं ना, रिजल्ट था मेरे करियर का. व्हेन आई फिनिश 5th इन द चैम्पियनशिप. जहाँ तक कि मैं द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स आई पुट इन, आई कुड हैव डेफिनेटली बीन टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 मैक. वर्स्ट इज टॉप 3. मैंने और मेरे नेशनल चैम्पियन में तभी 73 पॉइंट्स का डिफरेंस था. और अगर जो 4 रेसेस में मेरी गाड़ी चली नहीं थी उसमें आप मेरा एवरेज परफॉर्मेंस भी पकड़ लो तो मैं टॉप 3, टॉप 4 में रहता था. जहाँ मैं वो 4 रेसेस में 100+ पॉइंट स्कोर कर पाता था वहाँ पे मैंने 0 पॉइंट स्कोर किए. और इस बार वापस मैं 74 पॉइंट से नेशनल चैम्पियनशिप हार गया. और ये वक्त तब आया था जब तुमने अपनी ज़िंदगी के 6 से 8 महीने ना सब सारी चीज़ें छोड़ के, दोस्त छोड़ दिए, रिलेशनशिप छोड़ दिए, तुमने तुम्हारी सोशल लाइफ छोड़ दी, तुमने फैमिली को वक्त नहीं दिया, तुमने खुद को एंटरटेनमेंट के लिए वक्त नहीं दिया. तुमने ना ऑब्सेशन क्रिएट कर दिया था कि तुम्हें जीतना है. मतलब दैट वेंट बियॉन्ड हंगर. इट बिकेम एन ऑब्सेशन कि जीतना ही है कुछ भी हो जाए. मैड हो गया था मैं. आई थिंक मेरे पेरेंट्स एक पॉइंट पे कहना चाहते थे कि भाई रुक जा, मत कर रेसिंग, यू गोइंग क्रेजी. और तब जब ऐसा रिजल्ट आता है ना, यू रियली क्वेश्चन योरसेल्फ, यू रियली क्वेश्चन योर एम्बिशन इन लाइफ. 2021 के चैंपियनशिप के बाद, इनफैक्ट मिडवे थ्रू द सीजन आई वांटेड टू क्विट. इतना बुरा लग रहा था मुझे. बट इट वाज समथिंग एसेंशियल, इट वाज अ नेसेसरी लर्निंग. 21 के सीज़न कंक्लूड होने के बाद मैंने 99% डिसीजन ले लिया था कि मैंने रिटायर होना है. अभी मैंने नहीं करना रेसिंग. और अभी ना ये लाइफ के कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं. लेट्स गेट इनटू द रियल लाइफ. जॉब करो, पैसे कमाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो करो, हैव अ सोशल लाइफ, मेक फ्रेंड्स, गिव टाइम टू रिलेशनशिप्स और जियो ज़रा. बैलेंस करो. अभी हो गई रेसिंग वेसिंग, सब हो गया, काफ़ी हो गया, पूरा एफर्ट डाल दिया है तुमने, अभी कुछ नहीं होना. कम बैक टू रियलिटी. सो हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए और फुल टाइम जॉब शुरू कर दिया. ये ज़िंदगी का मेरा सबसे क्रेजी वाला एक्सपीरियंस था जहाँ पे यू फील द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर इनसाइड यू बट समवन टेक्स अवे योर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इट और शोकेस इट. दिस वाज माय स्टोरी फ्रॉम 2021. Wow. So like, how did you bounce back from that? What prompted you to, like, होता है ना, like, कि अब quit कर देते, छोड़ दो. That's the easiest thing to do, Yeah. So what made you not take that easy route and like, क्यों आखिर, कि हम बड़े आ गए फिर से ये सब, like you said, you went mad. The amount of discipline it takes to be a champion in India in any sport. Because India is such a huge country with so much talent. Yeah. You're always competing against so many people, even numerically. Like there's so many, the numbers are just crazy, right? And they're the best of the best. So to be a champion in India definitely means that you have, committed yourself to such a level. You can be qualified as a mad guy. So what made you want to go back to that madness?
एक्चुअली इट वाज अ जर्नी. ये ऐसा कुछ, ये डिसीजन ओवरनाइट नहीं हुआ था. इस डिसीजन के काफ़ी सारे फैक्टर्स थे एक्चुअली. अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच वर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. कुछ फैक्टर्स मेरे से रिलेटेड थे, कुछ फैक्टर्स किसी और से रिलेटेड थे. और जो मेरी लाइफ में हुआ इसके बाद 2021 के चैम्पियनशिप के बाद 2022 में मैंने सब रेसिंग के बारे में सोचना छोड़ के आई केम बैक, आई गॉट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. और मैंने फुल टाइम जॉब शुरू किया. आई मूव टू बॉम्बे और आई जस्ट बिकेम वन ऑफ दोज वेरी बेसिक नॉर्मल पीपल हु टेक अ रिक्शा टू जॉब, वॉक अराउंड द रोड साइड, चुपचाप ऑफिस पहुंचते हैं, जिनको रास्ते पे चलते थे कोई धक्का मार के चला जाता है, सॉरी भी नहीं बोलता है. मुंबई और फिर ये होते रहा. बट ऑफ कोर्स मैं आई यूज्ड टू लव माय जॉब, आई स्टिल डू, और आई यूज्ड टू गिव माय 100% देयर बिकॉज मेरे लिए सेंस ऑफ अचीवमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट उस टाइम क्या लग रहा था, लाइक यू नो अभी लाइक आई थिंक योर लाइफस्टाइल बैक एट होम वुड हैव बीन डिफरेंट, अलग लाइफ जीते हुए. मतलब एक देखो इंडियन घर में एक लड़का अलग लाइफ जीता है और जब वो बाहर जाता है, कॉलेज जाता है या काम करने जाता है, तो उसे जब सब खुद करना पड़ता है तो एक लाइफ अलग होती है. एंड nothing to be ashamed about. So like उस टाइम क्या चलता है दिमाग में? Cause we are guys, cause we are men, you know, ये कभी उतना एड्रेस नहीं होता है, बट उतना लोग पूछते भी नहीं है कि लड़का है कर ही लेगा. तो उस टाइम क्या चलता था लाइफ में, दिमाग में कि ना अब तो लाइफ ऐसी होगी यार, मैं तो ऑफिस जाने लगा हूँ, 9 to 5 आई एम डूइंग, यू नो. बिकॉज एथलीट जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं वो चाहते हैं कि वो 9 to 5 कभी ना करें, लाइफ अपने टर्म्स पे जिए. तो लाइक हाउ वाज दैट चेंज? सी व्हेन आई वाज, जब मैं बॉम्बे आने से पहले मेरी लाइफ बहुत अलग थी. राइट. पानी की बोतल तक खरीदने के लिए मैं कार लेके जाता था. हर एक चीज वो सर्व्ड. माता पिता की हार्डवर्क की वजह से नेवर नीडेड टू हसल और वर्क हार्ड इन लाइफ और टू स्ट्रगल फॉर समथिंग. बट वहाँ से बाहर निकलना था और उसके लिए देयर वाज अ कॉस्ट आई हैड टू पे. जब मैं बॉम्बे मूव हुआ, when I started this hustle of going to the office, से public transport से जा रहा हूँ, रोड साइड पे चल रहा हूँ, लोग धक्के मार के जा रहे हैं. Not that they have ill intentions, but everyone's got somewhere to be. कहीं पे एक human side बोलती थी कि it's okay, it's life, let's get on with it. कहीं पे athlete बोलता था धक्के तो वहाँ भी खाए, अभी यहाँ पे भी खा लो. The athlete inside me was taunting me. Every single day. Subtle taunts. हाँ चलो रेसकार से निकल गए, यहाँ पे आ गए. शोल्डर पे बैठते ना दोनों. हाँ yes, the good one and the bad one. So जहाँ पे 5 point सीट बेल्ट हार्नेस रहता था, वहाँ पे अभी ऑफिस की बैग आ गई, है ना. जहाँ पे हाथ में ट्रॉफी रहती थी, वहाँ पे छाता लेके घूमता हूँ बारिश में. जहाँ पे रेसिंग बूट्स पहनता था, वहाँ पे गीले जूते होते थे क्योंकि रास्ते पे बारिश में चलना पड़ता था टू गेट अ रिक्शा, टू वेट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड टू ट्रैवल. पर एक एथलीट का ना एक कोर वैल्यू रहता है. आप हमें अमृत में डाल दो, वी विल स्टिल स्विम आउट ऑफ इट एंड बी हैप्पी. आप हमें कीचड़ में फेंक दो, वी विल स्टिल स्विम आउट ऑफ इट एंड बी हैप्पी. एक वॉरियर मेंटालिटी क्रिएट हो जाता है. That's something we get from our sports. Yeah. That never say never attitude. Fall down 7 times, get up 8. The show must go on. Discipline, commitment, dedication. हमने बहुत सुना रहेगा ना कि हार्ड वर्क करो सक्सेस मिल जाएगा, हार्ड वर्क करो सक्सेस मिल जाएगा, यू हैव टू वर्क हार्ड. ये वर्क हार्ड है ना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. ये वर्क हार्ड इज जस्ट अ डिफरेंट वर्ड फॉर डिसिप्लिन. एंड डिसिप्लिन मीन्स कि यू फील ग्रेट, यू स्टिल डू इट. यू फील ओके, यू स्टिल डू इट. यू फील द वर्स्ट, यू स्टिल डू इट. You feel like the king of the world, you still do the same thing. You feel like you want to just give up on everything and sit in your room and cry, you still go and do the same thing. That's discipline. और जब ये स्ट्रगल हो रहा था, जब मैं जॉब जा रहा था, एक एक्सेप्टेंस लेवल था कि अगर ये करना है तो ये करना है. और इवेंचुअली जो अंदर का एथलीट था ना, ये बाहर आने ही वाला था. पर इसको बाहर आने के लिए एक रीजन नहीं मिल रहा था, एक कंपेलिंग रीजन नहीं मिल रहा था. 2022 के जुलाई में मेरे फैमिली में थोड़ा ट्रेजेडी हुआ था. माई सिस्टर शी लॉस्ट अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. माई फैमिली वेंट थ्रू अ बिग शॉक. और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ थी. सो आई वेंट डाउन टू माई सिस्टर्स टू स्पेंड सम टाइम विथ हर. और उसे देख के, मेरी फैमिली को देख के ऐसा एक घुटन महसूस हो रहा था कि इतना ग्रीफ है, क्या करें, इतना बुरा लग रहा है, क्या करूँ इसके बारे में. लाइक व्हाट डज अ ह्यूमन बीइंग डू.
और मैं चाहता था कि मैं ये सारा दर्द है ना कहीं पे चैनलाइज करूँ, ये अंदर रख के तो कुछ होना नहीं है, रो के कुछ मिलना नहीं है, और मैं भी रो दूंगा तो हाउ एम आई अ सपोर्ट सिस्टम फॉर माई फैमिली। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली में सिर्फ आदमी लोग ही सपोर्ट सिस्टम है, मेरी सिस्टर्स मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, मेरी मदर मेरे फादर मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। व्हेन विल आई बी द पर्सन हु माई फैमिली लुक्स अप टू फॉर देयर सपोर्ट? तो ये जो सब दर्द था, ये जो सब इमोशंस थे, ये सब मैंने पकड़ के रखे थे। और मैंने मेरी सिस्टर को उसके घर से वापस आने के पहले बोला था ना कि ये जो सब हमने फेस किया है ना अभी एज अ फैमिली, मैं जीतूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, एंड आई विल विन फॉर यू, आई विल विन फॉर द पर्सन वी लॉस्ट, एंड आई प्रॉमिस यू दिस। मैं ये बोल के निकला था वहां से। अभी इमोशन में आके बोल तो दिया बहुत कुछ, हम आ गए वापस, घूम फिर के वही हुआ, रिक्शा में बैठ गए, रिक्शा से उतरे, रोड साइड पे चल रहे, धक्के लग रहे लोगों के, कोई लोग स्माइल कर रहे, कोई लोग चिल्ला रहे, बट शो मस्ट गो ऑन। कहीं पे दिल बोल रहा था कि नहीं यार प्रतीक, यू कैन नॉट फिनिश लाइक दिस, यू कैन नॉट एंड योर रेसिंग करियर लाइक दिस, ऐसे नहीं खत्म करनी स्टोरी हमें। ठीक है, तूने 6-8 महीने दे दिए थे, जिंदगी छोड़ दी थी, पूरा रेसिंग किया था, यू स्टिल डिड नॉट विन, सो व्हाट, लाइफ इज नॉट ओवर। And then I started questioning myself, did I give an honest effort? Am I not going to go back to racing because things are not in my control? इसके पहले ना हर साल एक चैंपियन हुआ है, और हर साल के हर चैंपियन के कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी, और वो बने हैं चैंपियंस। तो अगर तुझे बनना है तो तुझे ऐसा कुछ करना होगा जो शायद तूने आज तक सोचा भी नहीं होगा। एंड देन स्लोली एक पिक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था मेंटल, और वो पिक्चर ऐसा था कि एक तो जिंदगी ना जीना कर लो, जी लो जिंदगी, ये कंपटीशन स्ट्रगल, ये जितना ही है, ये ऑब्सेशन, ये सब छोड़ दो, लीव ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड जस्ट लिव योर लाइफ। तो हम चले गए उस दौरे में, हमने रेसिंग के बारे में सोचना छोड़ दिया, प्रॉमिस तो करके आए थे सिस्टर को, रेसिंग का सोचना छोड़ के हमने गाड़ी वाड़ी खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, चिल कर रहे, लोग दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे, काफ़ी अटेंशन मिल रहा है, ड्रीम कंप्लीट हो गया। बर्थडे के दिन मर्सिडीज खरीदनी थी, चलो 2-3 महीने लेट आई, पर फिर भी क्या हुआ, मर्सिडीज तो आ गई, खुश है हम। कौन सी मॉडल थी? मैंने C300D ली, वो AMG लाइन जो आती है, काफ़ी पावरफुल गाड़ी है, बट इट्स अ ग्रेट कार फॉर डेली यूज। 30th बर्थडे पे 300D लेना था, हमने कर लिया। So you always thought कि एक दिन मर्सिडीज लूंगा, like was that a dream? 100%. I love Formula 1, I love Lewis Hamilton, he's my idol, and I love Mercedes as a team. तो मर्सिडीज के अलावा BMW तो खड़ी भी नहीं करनी है, मैं चाहिए ही नहीं। How did it feel when you got the key? I was on top of the world. मेरे लिए वो जख्म पे मलहम जैसा था गाड़ी खरीदना, क्योंकि वो वाइस चैंपियन होने के बाद 3 साल तक वेट करना पड़ा टू गेट अनदर शॉट एट विनिंग द चैंपियनशिप, उसमें इतना बड़ा डिफीट हो गया। अभी क्या करे, कहीं पे तो सुकून मिलना चाहिए, तो हमने गाड़ी खरीद ली, लाइक स्मॉल टर्म ग्रेटिफिकेशन, कि यू नो लूज कर रहे हैं ना, लूजर वाला फीलिंग आ रहा है, तो पैसे देके अच्छा फील करवा लो, गाड़ी खरीद ली। हालांकि गाड़ी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मेरे लिए एक इमोशनल साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ अचीवमेंट है। तो गाड़ी खरीदने के बाद कुछ पहले 1-2 हफ्ते बहुत अच्छा लगा, और फिर ऐसा हुआ कि गाड़ी खरीद के अभी तो खड़ी है घर के नीचे, मेरा क्या, वो है माए क्या, अभी भी मैं वो चाहता हूँ। इनफैक्ट गाड़ी खरीदने के पहले मैंने खुद को प्रॉमिस किया था, जब तक नेशनल चैंपियन ना बनूँ ना, शोरूम में जाके बोलूँगा नहीं कि गाड़ी खरीदनी है, पर कर दी ना गलती, कर दी मैंने, छोटी बात, खरीद ली गाड़ी। इमोशनल हो गया, चाहता था अटेंशन मिले, चाहता था कुछ ग्रेटिफिकेशन मिले, कर ली छोटी बात, कर ली छोटी सी एक्शन, और अब क्या है, कांट टर्न बैक फ्रॉम दैट। छोटी बात अभी लग रही है, बट उस टाइम पे इट्स नॉट दैट इजी टू डील विद इट, सो यू शुडंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, I think right. Yeah, maybe it's just my emotions coming out, maybe because you set your standards so high. Yeah, so वही हो रहा था, right? Like वो स्मॉल टर्म ग्रेटिफिकेशन इसके लिए चल रहा था कि मैं मेरे जॉब में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मेरी टीम, मेरे लीडर्स काफ़ी खुश थे मेरे परफॉर्मेंस से, मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता था ऑन अ डेली बेसिस, और एज अ प्रोफेशनल व्हेन आई वांटेड टू ग्रो इन माय फील्ड, आई वाज एक्चुअली गेटिंग देयर स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, वीक बाय वीक। सो एक तरफ एथलीट था जो साइड हो चुका था फिलहाल, और एक तरफ आप प्रोफेशनल लाइफ में ऑल्सो यू हैड टू फोकस, बिकॉज it's not just saying that I'm going to a job, I'm working, you have to put in a lot of effort there also, right? तो वहाँ भी quality work करना पड़ता है। So one side you were doing this and one side this athlete was just like, why have you caged me up, right? So this is what was going on. I think one side I was perhaps वो बोलते हैं ना killing it at my work every single day,
because of the amazing people I was working with. And on the other side वो मेरे अंदर का एथलीट है ना, वो उसको यार मैंने ऐसे डेजर्ट में छोड़ दिया था, ना पानी है ना खाना है, तू चल भाई अपने आप जहाँ तक जाएगा जा ले, ओएसिस मिल गया तो थोड़ा जिंदा रह लेगा, उस तरह से चल रहा था. बट ही वाज सफोकेटिंग, ही वाज डाइंग ऑन द इनसाइड एंड ही वांटेड टू कम बैक टू लाइफ. और जब तुम एकदम रॉक बॉटम हिट कर देते हो ना, वहां से जो कमबैक क्रिएट होता है ना आपका, उस कमबैक में ना एक अलग जलवा रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. उस मिठास में अलग मिठास होती है, उस तीखेपन में अलग तीखापन होता है, समथिंग लाइक दैट. बट यू बिकम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. राइट. मेरा जॉब होता था, which started at I think 9:30 in the morning and it went on till 7:30 in the evening. मैं ऑलमोस्ट 10 घंटा ऑफिस में रहता था. और मेरे पर्सनल लाइफ में फैमिली की ट्रेजेडी हुई थी जुलाई मंथ में. फिर मैंने गाड़ी खरीदी थी, खुश था मैं, जॉब अच्छा चल रहा है, सैलरी आ रही है, खुश है घर वाले. पर ये जो अंदर का एथलीट है ना, ये तड़प रहा था. ही वाज लाइक कि तेरा गेम खत्म नहीं हुआ है, द शो इज नॉट ओवर येट. ये करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है. ये करने के लिए नहीं है यार. तू सैलरी तू जिंदगी में कभी भी कमा ले, तू गाड़ी कभी भी 10 गाड़ियां खरीद ले, पर तू खुद कौन है, तेरा क्या आइडेंटिटी है, हु आर यू. तो फिर हमने सोचना शुरू किया. गाड़ी आने के 2-3 हफ्ते बाद वो एक्साइटमेंट डाइल्यूट हो गया. एंड देन आई वाज लाइक कि अभी इस सवाल का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा. अगर अपने को इम्पॉसिबल चीज अचीव करनी है तो हमें इम्पॉसिबल चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और फिर दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो गए. हमें सुनाई दिया कि दिसंबर जनवरी में नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है, पैंडेमिक के बाद पहली बार. हमें सुनाई दिया कि डेट्स कभी भी आ सकते हैं, डेट्स ऐसे टाइम पे आ सकते हैं कि रेस वीक चैंपियनशिप शुरू होने के 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले डेट्स आएंगी. और हमने बिना चैंपियनशिप के डेट्स अनाउंस होने के टाइम पे प्रैक्टिस शुरू कर दी. You jumped right into it. I jumped into the fireball without any planning. मुझे बस एक बात पता थी. This is 2021. This is October 2022. 22, right. ऑलमोस्ट एक साल बाद 2021 के हॉरिबल सीजन के बाद 2022 के अक्टूबर में मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. मुझे पता नहीं था रेस वीकेंड्स कब होंगे, बट मुझे एक टेंटेटिव आइडिया थी दिसंबर जनवरी में हो सकते हैं. सो मैंने खुद से एक प्लान बनाया कि दूर से इम्पॉसिबल लगता है, इम्पॉसिबल क्यों है, क्या है इसमें इम्पॉसिबल. देन आई रियलाइज कि यार सुबह मुझे 9:30 बजे ऑफिस जाना है, 7:30 बजे ऑफिस खत्म होगा, फिर वहाँ से घर आना है, जिम जाना है, और जिम से घर आते आते 9:30 बज जाते हैं. फिर प्रैक्टिस कब करेंगे छोड़ दो. प्रैक्टिस करने के लिए जगह कहाँ है. वो सिमुलेटर लगाने के लिए थोड़ी जगह लगती है. मेरा रूम छोटा है, ऑफिस में लगा नहीं सकते, ऑफिस अपना है तो नहीं. तो अब क्या करें. तो हमने हमारे बॉस के साथ बात की ऑफिस में. आई आस्क्ड हिम कि कैन आई प्लीज गेट सम स्पेस जहाँ पे मैं बैठता हूँ ऑफिस में, कैन आई प्लीज पुट माई सिमुलेटर एंड कैन आई प्रैक्टिस ओवर देयर. एंड देन माई बॉस वाज क्यूरियस, क्या करना चाहता है तू. एंड आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. और उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी जानने का ट्राई किया. एंड देन आई टोल्ड हिम दैट आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू विन दिस चैंपियनशिप. यू जस्ट गिव मी अ स्पेस टू प्रैक्टिस. माई बॉस गिव मी अ डेडिकेटेड स्पेस इन माई ऑफिस. ही इज लाइक ये तेरा रूम है, यहाँ पे तेरा सेटअप कर, इसकी चाबी तेरे पास रख, जितना प्रैक्टिस करना है कर, डोंट वेस्ट योर टाइम इन ट्रैवलिंग. ये मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था और ये मेरे लिए सबसे बड़ी साइन थी कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. ऐसा बॉस है सबको मिले. ही इज मोर देन अ बॉस, ही इज लाइक अ फादर फिगर. राइट. द वे ही सपोर्टेड, काफ़ी कुछ उन्होंने जिस तरह से किया है, इट्स आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. बट मुझे एक बात पता थी कि मुझे एक दिन को 2 दिन में बदलना है. I will split my day into 2 halves. My first half starts early in the morning. I wake up at 6:37. मैं ऑफिस जाता था, शाम 8 बजे पहुंचता था. 8 से सुबह 9:30 बजे तक ऑफिस में ट्रेन करता था. 9:30 बजे से रात के शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक ऑफिस में काम करता था. 7:30 बजे में वापस ट्रेनिंग शुरू करता था. 10:30 बजे डिनर वनर करके ट्रेनिंग खत्म करके ऑफिस लॉक करके 10:30 बजे अंधेरे में जहाँ पे सिर्फ कुत्ते रहते थे, स्ट्रीट डॉग्स, जिनको हाई बाय बोल के मैं घर चला जाता था. घर जाता था, बैग निकाली, कपड़े उतारे, फ्रेशन अप हुआ, बेड को टच किया, सो गए. सुबह आँख खोली, 6:30 बज गए, डिसिप्लिन में वापस रूटीन शुरू. 150 दिन हमने ये किया. There were times where I felt absolutely exhausted. But as I said, एक कमिटमेंट है, एक सपना है, एक एम्बिशन है. साइंस कहता है कि तुम्हारे बॉडी से पहले तुम्हारा माइंड गिव अप करता है. Yeah. Body can take a lot. Body can take a lot. Body can And take a I lot. have seen it. I have seen how much my body can take. It's about your mind.
तो मुझे बस 50% काम तो हो गया, पता है बॉडी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक एक काइंड ऑफ ट्रिक थी जिसको कहते हैं द फर्स्ट 3 hours ऑफ द डे नीड टू बी इमोशनलेस। So that concept of the first 3 hours कि दिन के पहले दिन कोई भी इमोशन नहीं फील करने, मैं पहली बार सुन रहा हूँ एंड मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड थोड़ा सा अगर सोचूं तो जिस दिन मैं जल्दी उठ जाता हूँ, वैसे आजकल उठता नहीं बट जब उठा करता था तो पहले कुछ 3 घंटे तो ऑब्वियसली, अगर इफ़ आई एम नॉट टचिंग माई फ़ोन यूज़ करके कुछ ना कुछ तो स्टिमुलेट हो जाता है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू से दैट एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट फ्रॉम नाउ ऑन। Sure, I mean, I think it's important to figure your own way around it. डिसिप्लिन का हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग डेफिनेशन होता है। कोई लोग डिसिप्लिन को परफेक्शन का चेजिंग कहते हैं, कोई लोग डिसिप्लिन को कहते हैं कि इवन 10% इज़ ओके एज फार एज यू कीप डूइंग इट। कोई लोग कहते हैं कि मेरा डिसिप्लिन होना चाहिए जो 80% के नीचे एफर्ट को कभी ड्रॉप ना करे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, आप किस तरह से उसको कैरी ऑन करोगे। मेरा फंडा सिंपल था, मैं जानता था मेरा वीकनेस क्या है। मैं जानता था कि एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन द अलार्म रिंग्स आई वाज एक्चुअली कन्विंसिंग माई सेल्फ रीजन्स टू स्नूज इट। आई वाज कन्विंसिंग माई सेल्फ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, आज 15 मिनट एक्स्ट्रा सोना तो जायज़ है। हाँ। और मैं समझ रहा था कि ये सब एक इमोशन का ही ट्रिगर है। जब मैंने खुद को कंट्रोल करके सिखा दिया कि पहले 3 घंटे इमोशंस कैन नॉट प्ले अ रोल, अच्छा लगे प्रैक्टिस करो, बुरा लगे प्रैक्टिस करो। Once it comes in habit, it really pays its 100% rewards. So I'm very interested to know, now you are the national champion. What's next? What are your goals? This whole journey that we got to know, which is so inspiring. मतलब और क्या बचा है, मतलब क्या करना चाहते हो आप? वेल लाइफ में आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि आपने किसी चीज़ को अचीव करने में काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, काफ़ी लेवल्स पे यू हैव compromised your friends, family, relationships, so on and so forth. आपकी social life exist नहीं करती है. Everybody just thinks that you're a very focused individual, which is great, but then you do crave people, you do crave friendships, you do crave time with your loved ones. So I think the first priority for me is to give time to my friends, my family, my parents of course, and regroup. No amount of success is valid or enjoyable if you don't have your loved ones to celebrate it with. एक अलग लेवल का सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है जब आपके लव्ड वंस आपको बताते हैं कि दे आर प्राउड ऑफ यू और दे आर हैप्पी अबाउट यू। ऑफ कोर्स यू नो इट, यू आर द वन हु इज एक्चुअली लिविंग द ड्रीम, बट एक अलग लेवल का कंफर्ट और एक अलग लेवल का प्रोडक्टिविटी वाला फीलिंग आ जाता है व्हेन योर पेरेंट्स, फैमिली, सिस्टर्स, योर फ्रेंड्स, दे आर ऑल हैप्पी अबाउट व्हाट यू हैव डन, बिकॉज they to an extent are the ones who also sacrificed time that they could have spent with you, but they chose to give you the time to practice, prepare, they supported in your ambition. उनका बहुत बड़ा रोल होता है जो वो डिज़र्व करते हैं सेलिब्रेट करना. So I think now my priorities are more towards spending time with my loved ones. And then I know the athlete is just resting now. He will eventually come back to life, and that's when I'll get onto the drawing board and make my next plans. Wonderful. So for anyone who is watching with an interest, to get into this sport, what do you suggest? How should they approach it? Like, we know pathways for various other sports, like academy join करते हैं, cricket खेलना होता है academy गए, district खेले, state खेले, मतलब पता है लोगों को. But in motorsports, I think it's very different. तो इसका क्या pathway है? I think motorsport में काफ़ी easy 2-3 स्टेप का प्रोसेस है. शुरुआत तो हमेशा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से होती है. शुरुआत हमेशा होती है कि आप फंडामेंटली खुद को पहले एक अवेयरनेस जनरेट कर लो कि आप किस चीज़ को, आपको जो पसंद है वो एग्जैक्टली क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी, knowing what you want and understanding how will you get there are two completely different things. हमारे कल्चर में, सोसाइटी में हम सबको ऑलमोस्ट पता है, we know what we want, but very few people understand how to get there. I think ये गैप ब्रिज करना is each and every individual's responsibility, whether it's their career related decision, whether it's their ambition or passion related decision. I think अगर आपको पता है कि आपको रेस करना है तो you need to understand what the sport is, right? First steps first, I think you should join the closest karting academy that you have. Go-karting academy. Right. Go-karting में at least आप एक basic level का certification program कर लो, जो आजकल 2 दिन का certification program होता है. जितने भी बड़े रेसर्स हैं दुनिया के, सब ने वहीं से शुरुआत की है ना? 100%. In fact, आज जो भी Formula 1 के ग्रिड पे ड्राइवर्स रेस कर रहे हैं, इन सभी ने
बहुत यंग एज से कार्टिंग की शुरुआत की थी, जो आज भी कार्टिंग करते हैं. कार्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन टू योर रेसिंग करियर. हालांकि देर आर लॉट ऑफ अदर चैम्पियनशिप्स एंड कैटेगरीज, बट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल ऑन दैट फ्रंट आपको कार्टिंग करना बहुत ज़रूरी है. तो आप शुरुआत कर सकते हो आपके क्लोजेस्ट रेसिंग एकेडमी में जाके, एक बेसिक्स कोर्स कर सकते हो कार्टिंग का, जहाँ पे वो आपको कार्टिंग भी सिखाएंगे, रेसिंग का भी नॉलेज देंगे और आपको इंट्रोड्यूस भी करेंगे कौन सी अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. रेसिंग में काफ़ी सारा फाइनेंशियल बैकअप भी लगता है. सो ऑफ कोर्स दीज डिसीजंस टू पार्टिसिपेट, कम्पीट एंड विन इनटू रेसिंग और मोटर स्पोर्ट, दे कम विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. ऐसा नहीं है कि टेनिस में आपने क्रिकेट में या फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया, मैच गए, हार गए, you come back and you have another match to prove yourself. In motorsport, every time you go race, you've paid some amount of you put some amount of investment into it, और then it becomes your responsibility. अगर आपका finances बहुत tight है तो you have to prove yourself in very limited number of opportunities. So in the interest of achieving what you want, you need to be really well prepared. In order to be well prepared, you need to be well informed, and in order to get the right information, I think you should get to the nearest karting or race training facility and get yourself a basics course done in racing. Right, so first step is like to go get into go-karting 100%. and see अगर आपको मतलब दूर से तो हो सकता है अच्छा लगता है, but when you actually get into it आपको Yeah. पता चलेगा कि do you want to do this for life? Yeah, Because I think I have met a few of the folks who said they really love driving a kart fast, they love driving a car fast, but जब वो race करते हैं, Yeah. when they realize what wheel-to-wheel racing is and what aggression is and how they have to not give up, they're not okay with that. Yeah. So really, that's the difference between knowing and understanding what you want. Yeah. So yeah, that's a very healthy practice that most of the interested people should take up. And once you know, you really understand what you want to do, then just go all out, man. Yeah. So I think ये काफी intense episode रहा है, one of the most intense and one of the most knowledgeable also, and I would rank it right up there. And I hope everyone really enjoyed this video. Yeah, it was really nice knowing you, and this is an invitation for more podcasts to come. And I would love to do a part 2 and 3 and 4 and 5 as we 100%, go on. 100%. And we would love to know about where you are in your journey and what all you achieve. You have a really interesting, really exciting achievement list till now. Thank you. And I feel that this is just the beginning. Right? I guess so. Yeah. I also have an idea. In case we come back again to do another podcast, we should call it a race weekend. Done. Because there's so many different things that happen in a race weekend, and we do the Yeah. same thing over here when we speak. Definitely. So yeah, maybe another race weekend with you. Yeah. That'd be a great idea. Definitely. And yeah, on that note, I hope you enjoyed this episode, and keep tuning in for more episodes on Sports Backstage to know what goes on behind the scenes in the lives of people in the sports industry. And yeah, do subscribe to the channel and like the videos. You guys watch my videos but you don't like it. That's very bad. So if you tell them, maybe they will. Come on, I'm a racing driver. I'm just gonna go for the kill. So whatever the big man says, you gotta do it. Yeah. Alright guys, we'll see you on the next episode. Cheers. Cheers.